Assalamu alaikum viewers. How are you? Viewers, today I brought the MCQs of model paper is finished, and today inshallah we will solve the subjective short answer questions from model paper. ये आज जो है आज हम इंशाल्लाह मॉडल पेपर के सेक्शन बी के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ये समझिए सेक्शन बी जो है इसमें कितने पार्ट हैं और कितने क्वेश्चन हमने इसमें से सॉल्व करने हैं। इसमें बेटा सेक्शन बी में हमारे पास पहले तो ये है कि 50 मिनट्स का होगा, बी और सी दोनों मिलाकर। ठीक है, टाइम इसका हमारे पास जो है वो 1 आवर एंड 10 मिनट्स होगा। इसमें हमें जो करना है ये सेक्शन बी ये 30 मार्क्स का होगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे। इसमें लिखा अटेम्प्ट 6 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन। 4 सब सेक्शन बने हुए होंगे। सब सेक्शन 1 पोएट्री प्रोज, सब सेक्शन 2 पोएट्री, सब सेक्शन 3 प्ले और सब सेक्शन 4 जो ग्रामर से होगा। इनमें से हर पार्ट से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन कंपलसरी है। 4 हो जाएंगे। अब बचे रह गए 2। वो 2 आप किसी भी पार्ट से और कर सकते हैं मजीद, लेकिन कंपलसरी आपने 6 करने हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तमाम क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ओके, नाउ कम टू सेक्शन बी क्वेश्चन 1। लुक एट हियर, section B question 1. Section B question 1 is why did Kashmir not join Pakistan? The answer is Kashmir did not join Pakistan due to the conspiracy of a Hindu Maharaja Hari Singh Dogra. Before the creation of Pakistan, the Muslims of Kashmir had voted to join Pakistan, but at the time of partition, the Maharaja accepted bribe from the Indian government and surrendered them this beautiful valley. Soon after this, Indian government sent its army and occupied a greater part of this beautiful valley. That is the reason. हिंदू महाराजा था जिसका नाम हरि सिंह डोगरा था, उसकी कंस्पायरेसी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में कश्मीर ज्वाइन नहीं हो सका। दैट इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दिस। हाउ डिड द बक्कन हेड कम टू बी रैकेड? ठीक है, कैसे वो ख़त्म हुआ, डूबा या तबाह हुआ, बर्बाद हुआ बक्कन हेड ड्रिल? नम आंसर 64 kilometers from Cape Town in South Africa, there was a rock in the sea which was then unknown and undiscovered. The buccan had wrecked when she hit against the rock and was split into two. No member of her crew was to be blamed as the rock was hidden. किसी मेंबर को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता और इस वजह से डूबा कि चट्टान जो थी वो समंदर के नीचे एक चट्टान थी और इसको किसी नक्शे पर नहीं दिखाया गया था और ये अनडिस्कवर्ड थी, इसलिए ये जो था बक्कन हेड ड्रिल जो डूबा टूट गया उससे टकराकर। नो वन न्यू अबाउट द लोकेशंस ऑफ द हाईली डेंजरस रॉक इन द डेप्थ ऑफ द सी। अलेक्जेंडर पॉप हैज राइटली सेड, जैसे अलेक्जेंडर पॉप कहता है, हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स हाइड्स द बुक ऑफ फेट। अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था heaven from all creatures hides the book of fate. Okay, now understood this question. Next question, what did the baroness think the legend was? Legend क्या था उसमें? Wolves of Snowgrade से ये question. The baroness thought that whenever anyone died in the castle, the wolves and dogs gathered around the castle and howled for the whole night. However, she did not believe in this idea. She told that nothing of this sort happened when her mother-in-law died. According to her, it is just a story that lends dignity to the place without costing anything.
ओके, दैट इज द आंसर। ये सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस थे, इसे क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है, हमें चॉइस लेनी है, लेकिन अभी तो मैं तकरीबन आपको कंप्लीटली सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। आप जो चाहें क्वेश्चंस वो लीव कर सकते हैं। ये सेक्शन बी में प्रोज सब सेक्शन ए था, और इसमें प्रोज का हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ सब सेक्शन 2, जिसमें हमारे पास है पोइट्री का, वो भी पार्ट 1। हमारी बुक के जो है ना 2 क्वेश्चन है पोइट्री बुक के, तो उसके पार्ट 1 जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 2 जो है वो सेकेंड ईयर के, इसलिए पार्ट 1 लिखा, वर्ड्स पार्ट 1। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर हेनरी वॉटन्स हैप्पी मैन हैविंग नथिंग येट एट ऑल। इसको डिफाइन करना है इस फ्रेज को कि जो एक हैप्पी लाइफ मैन होता है, वो जो हैप्पी मैन होता है उसके पास सब कुछ, यानी हैविंग नथिंग, ना होने के बावजूद सब कुछ होता है, ये कैसे? आइए देखते हैं। सर हेनरी वॉटन प्रेजेंटेड एन आइडिया ऑफ द हैप्पी मैन इन दिस पोएम। द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ that a happy man does not need any sort of armor for his defense, because he does not give the importance of material source which need defense. Okay, he has not public fame, desire to go upward, and secret vaults to save something for a rainy day. He has only a heart which is totally free from any guilt and envy. So Henry Wotton says that he has nothing, but he has everything. In this sense, he said. Okay. Now next question we have. Why do people think that Lucy is a living child? ये पोइट्री में से यानी सब सेक्शन पोइट्री का जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2। द पीपल थिंक ऑफ दैट, द पीपल थिंक दैट area, the people of that area think that Lucy is a living child. She is alive and not dead. If anyone goes to the moon, she will see the sweet face of Lucy running swiftly along as before singing a solitary and melancholy song, and never looking behind. Actually, when the people go through the moon, they are reminded of Lucy and they think of her. And when the people listen to the whistling sound of the wind, they take it to be the song of Lucy. Thus, they say that Lucy is alive. Lucy, being a glimpses of divine beauty, has not died but returned to the totality. Okay, understood? Now my dear student, these were 2 questions, and now the question number 3. What message does Lee Hunt want to convey through Abu bin Adam? Abu bin Adam की पोएम्स के थ्रू क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? पोएम का सेंट्रल आइडिया भी हो सकता है, ये मैसेज भी हो सकता है। ओके, नाउ थीम भी, मेजर थीम भी हो सकता है पोएम का। द पोएम अबू बिन आदम कंटेन्स द रिलीजियस कॉन्सेप्ट बिसाइड्स it also has some ethical and moral values. The poet, by explaining the incident of Abu bin Adam, was trying to make people believe that the man cannot have love of God unless he does not understand the sufferings of his fellow beings, because all the loves practiced by the human beings, the love of fellow beings supersets. He convinced the reader that in the eyes of God nothing is more remarkable and praiseworthy work than to service the humanity for his well-being. Love is your heart, which is given by God, so give it to others. Okay, today we have solved up to here. Inshallah, in the next video we will continue part subsection C इसमें सबसेक्शन 3 इंशाल्लाह शुरू करेंगे, जो प्ले होता है इंशाल्लाह। ये इस वक्त आपको पोइट्री तक हमने पढ़ा दिया। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव कर सकते हैं।
Inshallah, wait for the next video. Thank you so much. Allah Hafiz. Convey and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.